के दो हेड्स हैं, मैंने पहले बात की थी, कॉमन वो है और एक हमारे पास अल्ना से सुपिनेटर क्रेस्ट से आता है। तो उन दोनों हेड्स के दरमियान से रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच है इट्स गोइंग टू पास एंड गोइंग टू एंटर द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ये यहाँ से सुपिनेटर को क्रॉस करके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएगी। जबकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में मसल्स को, दोनों लेयर्स की मसल को सुपिनेटर से क्रॉस करेगी, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आ गई। तो इधर आप देखो तो हमारे पास ये कौन सी मसल है, सुपिनेटर से आई, नीचे आएगी तो ये हमारे पास मेनली एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। ऑन दैट मसल इट इज रनिंग। इन द अपर पार्ट इज गोइंग टू रन ओवर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड इफ यू सी दैट दे हैव separated or displaced the extensor digitorum tendon. वो superficial muscle है. So superficially it is going to be covered by the extensor digitorum. So it is present deep to extensor digitorum, superficial to abductor pollicis longus, running over the abductor pollicis longus. And as it moves downwards, it reduces in size and it's going to go deep and run exactly across the posterior interosseous membrane or interosseous membrane के posterior surface पे, ठीक है, deeply to reach the interosseous membrane on which it passes between the muscles as far as the wrist joint. पहले क्या हुआ, इसने सुपिनेटर की दो लेयर्स को पियर्स किया, ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आई। जब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आई, इसने deep to extensor digitorum and superficial to abductor pollicis, it ran for most of its course, then it moved downwards. And then it's going to be present deep right above the posterior aspect of the interosseous membrane between the deep muscles. और ये wrist joint तक ऐसे ही run करती है। wrist joint के level पे it forms a ganglion और a nodule, और जहाँ से फिर ये wrist joint को इसकी nerve supply जाती है। So the course of the posterior interosseous nerve is very, very simple. We don't have any complication, long courses, long relations. हमने इसको बहुत simplified रखा है। Deep to extensor digitorum, superficial to abductor pollicis, enters by passing through the supinator, then runs on the interosseous membrane between the deep muscles, ends at the wrist joint in the form of a nodule, where it ends by giving branches to wrist joint. Now the main artery of the main blood supply, source of blood supply for the extensor compartment is through posterior interosseous artery. Now who is going to tell me that posterior interosseous artery is a branch of which artery? Common interosseous artery. Ulnar artery. Common. हाँ, ठीक हो गया, सही बताया। Common interosseous artery and common interosseous artery is a branch of ulnar artery. So अब जो nerve है that entered by piercing the supinator muscles, but the artery is going to enter the posterior compartment by passing above the interosseous membrane and below the oblique cord. ठीक है, एक oblique cord है which is joining the two bones together. So below the oblique cord but above the interosseous membrane, इसने curve around करके पीछे चले जाना, it's going to curve around and or move towards the extensor compartment. In the extensor compartment, in most of its course, if you can see in the diagram, it is accompanying the posterior interosseous nerve. It is running deep to the extensor digitorum, then again it's also going to go deep and join the posterior interosseous nerve over the interosseous membrane. ठीक हो गया। अब अगर आप इधर देखो तो you can see more clearly. This is the extensor compartment. ये हमारे पास deep muscles हैं, हमने तो superficial जो muscles है उसको remove कर दिया, extensor digitorum को remove कर दिया, because it was running deep to extensor digitorum. So when we remove the extensor digitorum, you can see it is crossing which muscles? ये वाली को abductor pollicis longus, वो outcropping muscle में से वो होगी। Then we have the extensor pollicis longus, and then we have the extensor indicis. So it is running over all these three muscles. So deep muscle है, except the brevis, इस उन सारी three muscles को cross करती है। इन muscles को muscular branches भी देगी, इन सब muscles को arterial supply भी देगी,
and right at the point it enters extensor compartment, ये एक branch देती है, that is recurrent interosseous artery, which is going to participate in the anastomosis at the elbow. जो आपने पहले ही पढ़ी होगी, I'm very sure, because you've done the anastomosis around elbow. So as it enters the extensor compartment, it gives one branch, that is interosseous recurrent. Then it runs over the deep muscles, and while running its course, is going to give branches to all the muscles. Now over here, if you see, the posterior interosseous nerve is being joined by the interior interosseous artery. I'm sure you must have done in your flexor compartment blood supply के anterior interosseous artery किस point पे enter करती है extensor compartment में, above or below the pronator? Just above the pronator quadrant. Just up. Now, why do we need the anterior interosseous artery to go back and क्योंकि blood supply को सही तरह because the posterior interosseous जो posterior interosseous artery है, it's a very small branch of the common interosseous artery, and it is unable to fulfill the requirement of the extensor compartment. So जो interior interosseous है वो पीछे जाके supplement कर रही है after joining the posterior interosseous artery. This is how they end. अब क्या हुआ, ज्वाइन कर लिया the upper border of the pronator quadrant. हमारे पास एक और हमारे पास एक डॉर्सल, आपने वो आर्चेस पढ़ी है अभी, कार्पल एंड डॉर्सल, पामर एंड डॉर्सल कार्पल आर्चेस, बेटा की है कि नहीं की अभी? डिटेल इंट्रो पता है, करेंगे चलो। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की। हमने जैसे आप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था on the flexor side, through which the deep muscles are passing and entering the hand. On the extensor side, we have extensor retinaculum. It is a band-like thickening. If you can see this, it is again a modification of deep fascia. So this band-like thickening is covering, or rather keeping the tendons in place. 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, obliquely रन करता है, इसकी दो अटैचमेंट होंगी, one medial and one lateral. अगर आप lateral साइड पे देखो तो हमारे पास anterolateral border of the radius above the styloid process. अब medially साइड पे टेक्निकली तो इसको अल्ना पे अटैच होना चाहिए था, but it does not get attachment on the ulna, unlike the flexor compartment, flexor retinaculum. वो हमारे पास radius और अल्ना पे अटैच है. ये हमारे पास pisiform और triquetral पे जाके इसकी अटैचमेंट होती है. ये इसीलिए ये थोड़ा ओब्लीक रन करे, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली. अब दूसरा ये है कि अगर आप, if you remember the radius has a lot of grooves in the lower end on its posterior aspect. So the fibrous septa sent down onto those tubercles or the ridges on the extensor surface of the lower end. तो उससे क्या होगा कि there will be different compartments formed. We have 6 compartments in the extensor region के बिल्कुल बेस पे under extensor retinaculum. बिल्कुल ऐसे. ये हमारे पास रेडियस है, अल्लाह से आगे इधर से तो नजर अटैचमेंट यहाँ नहीं है, पर इसको क्रॉस तो कर रहा है ना हमारे पास ये extensor retinaculum. तो ये हमारे पास 3 lateral to medial और medial to lateral हमारे पास ये 6 compartments बनते हैं.